Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video, we are going to understand what is public good. So let's start with the video. Before start video, it's my humble request, if you really like the video, then like, share, comment and subscribe. So let's start with the video. What is public good? A public good is a special type of goods. A public good is a special type of goods that can be consumed by everyone regardless of whether they have paid for the good, because goods are available free of cost. See, public goods are those kind of commodity it can consume by everyone even though that person has not given any kind of tax to government, because when commodities are available free of cost, then no one can stop other consumer to consume it even though they have not given money. Example of public goods are street light, lighthouse, national and domestic protection, national defense, police service, public health, then flood defense, public park, beaches, public welfare program, education, road, research and development. These are some example of public good. So in very simple term, let me tell you, पब्लिक गुड्स वो कमोडिटी होती है जो जिसको लोग बिना पैसे दिए भी कंज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज व्हेन इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, देन अदर कंज्यूमर दोज हु आर पेइंग टैक्स, दे कैन नॉट एक्सक्लूड देम. दैट इज कॉल्ड पब्लिक गुड. नाउ क्वेश्चन अराइज, पब्लिक गुड कैसे आती है? सो सच काइंड ऑफ कमोडिटी टेक प्लेस, और वी कैन से सच काइंड ऑफ कमोडिटी कंजम्पशन इज पॉसिबल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन. सो क्या बोलता है ये पॉइंट? There are cases in which goods and services are not supplied by market. It means the supply is inefficient. जब कोई भी commodity market supply नहीं करता है, when it is supplied by government itself, so that time the consumption is possible without payment. Second cause, this may arise because of the nature of the product. For example, for some commodity, the marginal cost is zero or very low, or in cases of some commodity you cannot exclude any consumer to consume it, so that time the cases of public good arise. So क्या बोलता है ये point कि why public goods arise in a market? In some cases, some goods supplied only by the government, it cannot supply by private entity. दूसरा है, sometime the marginal cost of any product is zero or very low, so that time you cannot exclude any consumer to consume it, so that time the cases of public good arise. It may also arise whenever the type of market, or we can say when it also depend on the what kind of market it is there. If market is totally incomplete or missing market is there, incomplete or missing market means what, where द डिमांड इज देयर बट सप्लाई इज नॉट देयर. तो जब इस तरह का कोई मार्केट होता है, तभी भी पब्लिक गुड के केसेस अराइज होते हैं. एग्जाम्पल, पब्लिक एजुकेशन, कोविड वैक्सीनेशन, पोलियो ड्रॉप, पब्लिक सैनिटेशन. सो इन सच काइंड ऑफ इन सच काइंड ऑफ केसेस द कंडीशन ऑफ पब्लिक गुड अराइज. सो सिंपली हमने क्या पढ़ा? Public goods are those commodity which supplied by government. It can consume by everyone, even though they have not given money, because it is available free of cost. Now question arise कि what are the characteristic of public good? See, public good को हम किसी को consume करने से क्यों नहीं रोक सकते? Because public good based on following characteristic. Number one is called non excludability. It means whoever produce or maintain the public good even at a cost cannot prevent any other people from enjoying its benefit. One cannot deny other consumption. It means कि जो भी पब्लिक गुड को कंज्यूम करता है, वो दूसरे पर्सन को पब्लिक गुड को कंज्यूम करने से नहीं रोक सकता है. क्यों नहीं रोक सकता? बिकॉज उसका प्रोडक्शन ही वैसा है. एग्जाम्पल, नेशनल डिफेंस. सो इफ देर इज अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, okay, so that time you cannot ask government or you cannot exclude any person कि भाई जो भी डिफेंस मिल रहा है वो आप मत दो, सिर्फ हमको ही मिलेगा बिकॉज हमने टैक्स भरा है. so that is not possible. In case of public good, you cannot deny, you cannot exclude consumption of other person even though that person has not given any kind of payment. दूसरा उसका कैरेक्टरिस्टिक है नॉन राइवलस इन अ नेचर. क्या बोला यहाँ पर? one individual does not reduce the opportunity for other to consume it. No reduction in the quality and quantity of the public good. इसका मतलब क्या होता है? For
द कंजम्पशन ऑफ पब्लिक गुड, समझो कि मैंने टैक्स भरा है और मैं पब्लिक गुड कंज्यूम कर रही हूँ और मेरे फ्रेंड ने टैक्स नहीं भरा है, दैट पर्सन ऑल्सो कंज्यूमिंग पब्लिक गुड, तो उसके कंजम्पशन से मेरा कंजम्पशन कम नहीं होगा. Example again, if there is a war between India and Pakistan and government is giving me defense, तो अगर गवर्नमेंट मेरे फ्रेंड को भी डिफेंस दे रहा है तो उसके डिफेंस देने की वजह से मेरा डिफेंस कम नहीं होगा. सो इन ए केस ऑफ पब्लिक गुड, फर्स्ट पॉइंट, यू कैन नॉट एक्सक्लूड एनी अदर पर्सन टू कंज्यूम पब्लिक गुड. सेकेंड है कि माई कंजम्पशन और वी कैन से अदर पर्सन कंजम्पशन विल नॉट रिड्यूस माई कंजम्पशन. जैसे अगर मैं किसी होटल में गई, अगर मैंने 500 रुपये भरे हैं और उसके लिए मुझे खाने का कुछ सामान मिला है, सो इफ़ यू आर गोइंग टू कंज्यूम दैट विदाउट पेमेंट, तो भाई मैं क्या खाऊंगी, कुछ नहीं. सो दैट इज अ राइवलियस इन नेचर. बट इन केस ऑफ पब्लिक गुड, इफ यू आर कंज्यूमिंग समथिंग विच इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, सो योर कंजम्पशन विल नॉट रिड्यूस माई कंजम्पशन. एग्जाम्पल, स्ट्रीट लाइट. स्ट्रीट लाइट अगर रोड पे लगी हुई है तो आप भी उसका इंजॉयमेंट कर सकते हो और मैं भी ले सकती हूँ, इवन दो यू हैव नॉट गिवन मनी. So second characteristic of public good is what? के no one can reduce the consumption, you know, no one can be reduce the consumption of public good अगर उसने पैसे नहीं भी दिए हैं तो पहला है, आप किसी भी कंज्यूमर को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो पब्लिक गुड कंज्यूम करने में. सेकेंड इज नॉन राइवल इन कंजम्पशन. इट मीन्स द कंजम्पशन ऑफ वन पर्सन विल नॉट रिड्यूस आफ्टर कंजम्पशन ऑफ अ पब्लिक गुड जिसके लिए उसने पे ही नहीं किया है. थर्ड पॉइंट इज इंडिविजुअलिटी. इट मीन्स public good you cannot consume on individual level. Example, national defense. National defense provide equal defense and security to each and every citizen of a country. Street light provide equal light to each and every citizen of a country. So public good we cannot consume on individual level, it always consume in a collective way. Next is free rider problem. The free rider problem is the burden on a shared resource that is created by the use of overuse by people who aren't paying their fair price. सिंपल इसका मतलब होता है कि ड्यू टू नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी एंड ड्यू टू नॉन राइवल नेचर ऑफ पब्लिक गुड, समटाइम पीपल आर नॉट रेडी टू पे वॉलंटरी. जब मुझे कुछ भी फ्री में मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली आई विल नॉट पे फॉर इट. So due to such kind of characteristic, free rider problem arise in a consumption of public good. Now, there are two type of public good. There are two type of public good: pure public good and impure public good. Pure public good based on two important characteristic, that is called non-rivalrous and non-excludability. One point I forgot to write here. So there are two type of public good: pure public good and impure public good. Pure public good based on two important characteristic. It is a non-rivalrous in nature and it is a non-excludable in nature. Example, defense and lighthouse. So in case of pure public good, two important characteristic are there. First, you cannot exclude any person to consume it, and the consumption of one person will not reduce the consumption of other person. So best example is defense and lighthouse. Second is impure public good is what? It is a partially non-rivalrous and partially we can exclude it. Example, service of railway and toll road. यहाँ पर हमको थोड़ा बहुत अमाउंट पे करना पड़ता है. Next is other information or we can say other characteristic of public good. It is provided by government or the state, we can say, or nature. देन है इन पब्लिक गुड. इन केस ऑफ पब्लिक गुड देयर इज नो डायरेक्ट पेमेंट. समझो मैंने आज टैक्स भरा तो पब्लिक गुड शायद मेरी फ्यूचर जनरेशन को मिल सकती है. नेक्स्ट, इन केस ऑफ पब्लिक गुड इट विल प्रोवाइड इक्वल ट्रीटमेंट टू रिच एंड पुअर. अगर डिफेंस है तो इट विल प्रोवाइड इक्वल ट्रीटमेंट टू रिच एंड पुअर. स्ट्रीट लाइट प्रोवाइड इक्वल लाइट टू पुअर एंड रिच. नेक्स्ट इज इट रेडीली अवेलेबल, मतलब कोई भी इसे कंज्यूम कर सकता है. जैसे रोड बनाया है गवर्नमेंट ने तो कोई भी उस रोड पे चल सकता है, इवन दो दैट पर्सन हैज नॉट गिवन सिंगल पेनी. Then the quality of public good remain constant even though if it is consumed by a poor person or Ambani, but the quality of public good will remain constant for each and every citizen of a country. Apart from public good, other types of goods are also available. In that, number one is called private good. Private good based on one of the very important assumption, that is called excludable and rivaler. तो क्या बोला है कि प्राइवेट गुड मतलब कार. अगर मैंने कोई कार खरीदी है तो मैं किसी भी पर्सन को मैं किसी को भी एक्सक्लूड कर सकती हूँ मेरी कार में नहीं बैठने के लिए, और अगर वो मेरी कार चलाएगा तो मैं क्या चलाऊंगी. सो इन केस ऑफ प्राइवेट गुड इट इज द राइवलस इन नेचर एंड एक्सक्लूडेबल. नेक्स्ट इज क्लब गुड. क्लब गुड मीन्स
when commodity consumed in a collective form or a group form. Club goods are based on one of the very important assumption, that is called excludability and non rivalries. एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स, अगर समझो कि मेरे पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है और मेरे फ्रेंड के पास नहीं है, सो आई कैन एक्सक्लूड माई फ्रेंड टू नॉट टू वॉच मूवी ऑन नेटफ्लिक्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड है, इट इज़ अ नॉन राइवलस, इट मीन्स अगर समझो कि मेरे बिल्डिंग में 10 लोगों ने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो एक ही साथ अगर हम 10 एक ही मूवी देख रहे हैं, सो इट विल नॉट रिड्यूस माई कंजम्पशन। सो क्लब गुड के केस में वी कैन exclude consumer, but it will not rivalrous in nature. Third is called merit good. Merit goods mean those commodity which provided by government as well as private. Example, education, vaccination, etc. It is also based on two important assumption, that is called excludability and rivalrous. Fourth is called common resource good. Example, national park. See, whenever any public good means what? The commodity which can consume by everyone even though that person has not given single penny. So whenever the overconsumption of public good increase, so to stop the overconsumption of that good, sometime government declare that commodity as a common resource good. तो उसमें गवर्नमेंट आपको एक कंडीशन रखेगी या कुछ पेमेंट रखेगी व्हेन यू आर गोइंग टू यूज इट. सो कॉमन रिसोर्स गुड आर नेशनल पार्क. Next is called global goods. Global goods means what? Which can consume by everyone on global level. Example, clean air, Wikipedia. Okay. Next is demerit good. Demerit goods are those commodity which create a harmful and negative impact on society after consumption. So best example is alcohol and cigarette. I hope you really like the video. So if you really like it, then please put message in a comment box and subscribe it and share to your friends. Thank you so much. God bless you.